Hello students. So the next question is about the gravitational, in which we have given the gravity at the Earth's surface. As we know, it's a 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. यहाँ पे ग्रेविटी क्या होती है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. हमें ये पूछा गया है कि एट विच अल्टीट्यूड हम अर्थ सरफेस से कितना ऊपर जाए, अल्टीट्यूड एट सम हाइट h, और वी कैन से द रेडियस r also. Let's denote it with r. It's better. Okay. तो किस r पे हमें ग्रेविटी की जो वैल्यू है that will be become 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, which is simply this ग्रेविटी की वैल्यू का हाफ है. यह हमारा क्वेश्चन है और हमें इसमें हाइट और अबाउट द अर्थ सरफेस और रेडियस ये हमें फाइंड आउट करके बताना है. ठीक है. From the concepts of the gravitational chapter, we get the one relation between the effective acceleration due to gravity. हम उसे लिख सकते हैं G effective is equals to the acceleration due to gravity at the Earth's surface. This is the surface. Okay. Upon 1 plus h upon r to the whole square. This r is basically radius of the earth, जो कि हमें नोन वैल्यू है 6400 किलोमीटर्स. ओके. सो the g effective we have as g by 2. We will write it as g by 2 is equals to g upon 1 plus this h we have to find it out. Okay, we will find it out as h simply upon r whole square. This g to g get cancels. If we take 1 plus h by r whole square to the here and this 2 to there, we get as 2. Taking the square root to the both side, 1 plus h upon r is equals to root 2. Simple. And simply h upon r is equals to root 2 minus 1. That is 1.41 minus 1 is 0.41. And h is equals to 0.41 times of 6400 kilometer, or we can write 64 into 10 to the power 3 meters. Okay. Finally, we will get the answer as 2.6 into 10 to the power 6 meters above the Earth's surface. This is equals to r, what we are finding. This is the answer to our question. I hope you like this video and you understand this question. Basically, this question is completely based upon the gravitational concepts and the concept of the effective gravity above the Earth's surface. We can simply solve also for the question like if we are given the gravity at the surface and we have to find the gravity at the some depth of some d. It has some different formula. It is for the above height, this is the formula. For the depth, there is a 1 minus other formula, right? So in this way, we will solve this question. If you have any doubt, you can comment below. And if you like this video, please share with your friends and subscribe to my channel. Thanks for watching. And the relative permittivity of any material. So we are asked about the permeability of the diamagnetic material. For the diamagnetic material, the value of the mu r is always being slightly less than 1. Slightly. Okay. And the value of the relative permittivity epsilon r, this is for the diamagnetic, right? And the value of epsilon r for any material, it's rather than diamagnetic or paramagnetic, it's not depend on it. For any material, it's always being greater than 1. Okay. This is a simpler question, depends upon whatever you know. Okay. These are from the applications of the magnetisms, and
If you want some other details about this, you can ask me, and according to this we can mark the options accordingly, and by finding this we get the option B as our correct answer. So guys, let's move to the next question. It's a question number 12. It's about the finding the current from the given magnetic flux. मैग्नेटिक फ्लक्स हमें गिवन है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, टाइम के फंक्शन में हमें मैग्नेटिक फ्लक्स गिवन है, जिसमें हमें करंट फाइंड आउट करना है आर। और करंट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? पोटेंशियल अपॉन व्हाट? रेजिस्टेंस। ठीक है, हमें यहाँ पे क्वेश्चन में रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है एज अ 5 ओम। व्हाट इज गिवन एज 5 ओम, and the time is also given as 2 seconds. So अभी हमें यहाँ पे सबसे पहले फाइंड आउट क्या करना होगा? यहाँ पे पोटेंशियल। सो पोटेंशियल कैसे फाइंड आउट करते हैं? पोटेंशियल वी रिप्रेजेंट एज E which is equals to differential of this flux dy d5 by dt। क्या हो जाएगा ये? You know, I think you know the basic differentials। 3 इधर आ जाएगा, 3 5 3 15 t square plus 8t plus 2, दिस कांस्टेंट का तो 0 हो जाएगा। ठीक है, एंड I is equals to simply 15t square plus 8t plus 2 upon this R as 5 ohm। This value is at t is equals to 2। So let us find it out simply. Okay, we will get it out as 15 into t 15 into 2 square plus 8 into 2 plus 2 upon 5। 15 4 is 60 plus 8 2 is 16 plus 2 divided by 5, we get 16 to 18, this is becomes 78 by 5, this becomes 5 1s are 5, 5 15 15 5 is 75 and 3 it becomes 6। I think it's an ampere. Am I correct? Yeah, 15.6 ampere। The option A is correct. Option A is our right answer. So this question is basically about finding the current. We should know how to find the potential from the given magnetic flux, and we will simply get the potential by differentiating the value of the flux and putting our time value as t is equals to 2 seconds, r value as a 5, and we simply reach to our answer. I hope you understand this question. If you have any doubt, you can comment below in the comment section, and if you like this video, please share it with your friends and subscribe to this channel. Hello student, let's move to the next question. We are finding in this question about the change in the volume or the increase in the volume. इसमें हमें दिया गया है एक सॉलिड मेटेलिक क्यूब है, ठीक है, जिसका टोटल सरफेस एरिया हमें गिवन है 24 मीटर स्क्वायर। अब आपको ये फर्स्ट चीज पता होनी चाहिए कि टोटल सरफेस एरिया जो होता है क्यूब का, दैट इज मींस उसके फेसेस होते हैं। ठीक है, कितने फेस होते हैं? 6 फेसेस। एक फेस का एरिया कितना होता है? एक फेस हमारा स्क्वायर होता है। इफ वी से द साइड एज ए, तो हमारा एक सरफेस का एरिया कितना हो जाएगा? ये ए स्क्वायर। ठीक है, एज लाइक दिस सरफेस। इसी तरीके से टोटल सरफेस कितना हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया विल बी सिंपली 6 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है, तो हमें टोटल सरफेस एरिया गिवन है 24। उससे हमें फाइंड आउट ये करना है कि इंक्रीज इन वॉल्यूम कितना होगा अगर इंक्रीज इन टेम्परेचर हमने कुछ वैल्यू दिया। इफ वी गिव द इनपुट एज सम, इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर of this cube, solid metallic cube, then what will be the increase in the volume of this cube? Volume of the cube expand करेगा, क्यूब एक्सपेंड होगा, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा क्यूब एक्सपेंड होगा। लीनियरली हम क्या देखते हैं? जब कोई रॉड होता है, जब वो एक्सपेंड करता है तो उसमें हम अल्फा कोएफिशिएंट देखते हैं, जब उसे हीट करते हैं तो वो एक्सपेंड होता है। इन द सेम वे जब इस क्यूब को भी हीट करोगे आप,
तो ये भी एक्सपेंड करेगा, लेकिन ये तीनों डायरेक्शन में मूव करेगा, एक्स वाई एंड दिस इज जेड, तीनों डायरेक्शन में एक्सपेंड करेगा। इसके लिए हमें डेल्टा वी फाइंड आउट करना है, और उसमें हम अल्फा नहीं यूज करेंगे, उसमें हम गामा यूज करेंगे। लेट्स सी द व्हाट इज द सॉल्यूशन। So guys, let's first start with the finding the value of A. We have given the 6A square total surface area is 24. This get cancel as 4 times. A becomes 2. A कोई निगेटिव वैल्यू तो हो नहीं सकती है, ठीक है। साइड ऑफ द स्क्वायर हमारे पास आ गई A. Now we will find the increase in the volume. As I think you should know the formula of increase in the volume delta V. That will be simply V naught गामा इंटू डेल्टा टी, ठीक है। इसमें हमें वी नॉट, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, इट्स ए क्यूब, आई थिंक एवरीवन सबको पता होगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गामा, इट्स 3 टाइम्स ऑफ अल्फा, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। गामा की वैल्यू 3 टाइम्स ऑफ अल्फा होती है, एंड गामा इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ अल्फा, बीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ अल्फा। जब हमें एरियल एक्सपेंशन अगर करना होगा तब हम बीटा की वैल्यू 2 अल्फा यूज कर सकते हैं, इनटू डेल्टा टी एज वी हैव गिवन। लेट अस पुट द वैल्यूज, व्हाट एवर द वैल्यूज वी हैव गिवन फ्रॉम द क्वेश्चन। सो क्वेश्चन में हमें दिया गया है अल्फा की वैल्यू है 5 इंटू 10 टू द पावर -4, 2 की हमें वैल्यू मिल चुकी है 2 का क्यूब, 3 इंटू 5 इंटू 10 to the power -4, this is for degree Celsius ही होगा, and into what is the value of increase in the temperature guys, it is a 10 into 10. So what we get, 8 10 80 into this 3 24 into 5, or we can write it directly 15 into 8 120 into this -4 and this 10 to the power -3, it becomes 0.12 meter cube. So guys, 0.12 मीटर क्यूब का जो हमारे पास वॉल्यूम का चेंज मिलेगा। अब हम इसे सेंटीमीटर क्यूब में कैसे लिख सकते हैं, सी 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 100 इंटू 10 टू द पावर 3, 100 का क्यूब सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। सो it is nearly 10 to the power 2 and 10 to the power, this is what 10 to the power 2, 10 to the power 3, it becomes 10 to the power 6 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। and if we have 1 meter cube, we will simply write it as 0.12, एक इस मीटर क्यूब को हम 10 to the power 6 से कन्वर्ट कर देंगे सेंटीमीटर क्यूब, एंड लेट्स मैच टू द ऑप्शन, एक पॉइंट आगे लेके जाएंगे, वी विल गेट 1.2 into 10 to the power 5 सेंटीमीटर क्यूब as our change in the volume, that's with matches with option B. आई होप आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा। हेलो स्टूडेंट्स, सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज अबाउट द इंडक्टेंस, जिसमें हमें 2 कॉइल्स बताए गए हैं। 2 कॉइल्स एक ओरिएंटेशन, एक पोजीशन ऐसे प्लेस किए गए हैं, तो हमें पूछा है कि ये इनका जो इंडक्टेंस होगा वो किस पे डिपेंड करेगा। अगर 2 कॉइल्स प्लेस किए गए हैं तो उन पेयर के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा, एज वी नो दैट वी रिप्रेजेंट एज एल, ओके। सो ये जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा।
अब फर्स्ट फैक्टर इसमें ये होता है कि ये डिपेंड करता है पोजीशन पे, कि आपने ये दो जो कॉइल्स है आपने कहां पे रखे, कितने पोजीशन पे रखे, एक यहां पे रखा, एक बहुत दूर रखा, एक यहां पे रखा, एक पास में रखा, ये पोजीशन पे डिपेंड करेगा। अनदर वन क्या है, ये डिपेंड करेगा ओरिएंटेशन पे। ठीक है, ओरिएंटेशन कि ये कॉइल्स जो है दीज आर इन द सीरीज और दिस कॉइल्स आर इन पैरेलल। ओके, ठीक है, तो इस तरीके से ये इनका ओरिएंटेशन किस तरीके से है उस चीज पर ये मैक्सिममली डिपेंड करेगा। आई थिंक इस क्वेश्चन में और कोई डाउट तो होना नहीं चाहिए। अगर आपको कोई इसमें डाउट या फिर आपको कोई इसके रिगार्डिंग अगर कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई देयर। And if you like this video, please share with your friends and subscribe to this channel. Thanks for watching. About the de Broglie's wavelength. It's basically about the de Broglie's wavelength and also about the energy. We have to find the relation about the energies and the energy between the energy and the de Broglie's wavelength, and we have to compute what will be the order of the de Broglie's wavelength for electron, proton and the alpha particles. So as we know, the relation is given as lambda is the de Broglie's wavelength is equals to h upon m into v. We can rewrite this equation as h upon under root of 2mk. Okay, see, the h is the constant, k is the constant, 2 is a constant, so we can simply write lambda is directly proportional to 1 upon root m. Okay, now I think we should know what is the order of the mass for the electron, proton and the alpha particle. हमें ये पता है एक्चुअली कि mass of alpha particle जो है that is more than mass of proton and this is more than mass of electron. Okay, according to this we can get the order of the de Broglie's wavelength in the reverse, nothing other than that. So what will be the order? Lambda of electron is more than lambda of proton is more than lambda of alpha particles. So according to this, option number B is our correct answer. I think there are no chances of getting doubt, because if we know the relation between the de Broglie's wavelength and the energy, we can simply compute about this and we should know the mass of the electron, proton and the alpha particles. Alpha particle का actually mass जो होता है because of the two nuclei ये ज़्यादा होता है from the proton and the electrons. Simply in the reverse order we get the value of the order of the de Broglie's wavelength. I hope you like this video. Please share with your friends and also subscribe to this channel. So guys, let's move to the next question. ये क्वेश्चन एक्चुअली बेस्ड अपॉन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी पॉइंट का, किसी ऑब्जेक्ट का इन सम मटेरियल्स, हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अकॉर्डिंग हम उसके एपेरेंट लेंथ एंड द रियल लेंथ इसके बारे में रिलेशन पता होना चाहिए एंड इस रिलेशन के जरिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में एक्चुअली हमें दिया गया है कि एक आइस क्यूब दिया गया है जिसमें एक बबल फॉर्म हुआ है। इस बबल को अगर एक साइड से देखा जाए तो वो 12 सेंटीमीटर पे दिखता है एंड अगर अपोजिट साइड से अगर देखा जाए तो ये 4 सेंटीमीटर पे दिखता है। तो हमें इसकी रियल पोजीशन हमें बतानी है, जिसमें कि हमें जो उसका क्यूब है, आइस क्यूब है, उसका जो साइड है दैट इज गिवन एज 24 सेंटीमीटर। सो लेट्स स्टार्ट बाय सॉल्विंग दिस क्वेश्चन।
So guys, we can see this eyes as from the front view 24. Let's say this is the point, some x point at some distance of x from the one side. Okay, अगर इस साइड से अगर वो x डिस्टेंस पर है तो इस साइड पे कितना होगा गाइस? इट विल बी सिंपली फ्रॉम 24 माइनस x. ठीक है, सिंपल. नाउ हमारे पास रिलेशन होता है ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू डिस्टेंस फ्रॉम द रियल डिस्टेंस कितना है अपॉन एपरेंट डिस्टेंस कितना है. ठीक है, तो हम सिंपली यहां से हमारे पास दो केसेस है. फर्स्ट केस में हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे फाइंड आउट करेंगे हम? डी रियल, ओके, विच इज एक्स अपॉन एपरेंट. एपरेंट क्या बोला है हमें? 12. एक साइड से अगर देखा जाए तो हमें कितने डिस्टेंस पे दिखता है? 12 पे. एक साइड से अगर देखा जाए तो कितने पे दिखेगा हमें? 4 पे. सो ये एंड म्यू अगेन डी रियल अपॉन 4. फर्स्ट केस में डी रियल क्या होगा हमारा? x. अगर हम इस साइड से अगर देख रहे हैं, इस साइड से अगर देख रहे हैं तो कितने डिस्टेंस पे दिख रहा है? करेक्ट क्या है? x. और दिख कितने पे रहा है? 12 पे. अगर हम अपोजिट साइड से अगर देख रहे हैं, तो हमें कितने पे डिस्टेंस पे दिख रहा है? रियल कितने पे है? 24 माइनस x एंड एपरेंट कितने पे? 4 पे. Both are the point same. Let's say point P. So x upon 12 is equals to 24 minus x upon 4. This is cut for 3 times. X is equals to, we will get x by 3. It comes to the here. 1 plus 1 by 3 becomes 4 by 3 times of x is equals to 24. This goes for the 6 and x will simply comes up to 18. I think guys, so guys, 18 is the point at which the bubble is formed. 18 ये रियल डिस्टेंस है. जो 24 का जो डायमेंशन का क्यूब है, आइस क्यूब है, उसमें बबल का जो लोकेशन है दैट इज एट 18 डिस्टेंस. 18. ठीक है, सो वी गेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एज डी रियल 18 अपॉन डी एपरेंट. अगर इस साइड से अगर देखा जाए, दिस x वी गॉट एज अ 18. इस साइड से अगर देख रहे हैं हम तो करेक्ट डिस्टेंस कितने पे? 18 पे. लेकिन अपीयर कितना होता है इस साइड से? 12. सो द करेक्ट इज 18 एंड अपीयर कितना होता है? 12. ये कितना आ जाएगा गाइस? 1.5. अगर हम उस साइड से अगर देखने की कोशिश करें तो अगर उस साइड से अगर फाइंड आउट करें तो हमें कितने पे दिख रहा है? 24 माइनस एक्स पे रियल है. तो 24 माइनस एक्स कितना हो जाएगा? 24 माइनस 18 becomes 6 upon what is the apparent? 4. It will be also simply 1.5. अगर हम दोनों भी केस से अगर फाइंड आउट करने जाए तो we will get the same result as 1.5. So according to this हमारा ऑप्शन जो है वो B यहाँ पे करेक्ट हो जाता है. ऑप्शन नंबर B. I think इस क्वेश्चन. So guys, let us move to the next question. ये क्वेश्चन एक्चुअली बेस्ड अपॉन है wavelength and about the series of the various series in which there is a one series Paschen series, जिसमें हमें longest wavelength find out करना है and we have given the radius also. I think guys we should know for the Paschen series के लिए longest wavelength कब occur होती है? जब n1 की वैल्यू 3 होती है and n2 is equals to 4 होता है. Right? So by finding this, we have the formula for the longest wavelength as 1 upon lambda is equals to r times 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square. ये फॉर्मूला आपको रिमेंबर करना होगा. ठीक है, we can simply find it out as 1 upon lambda is equals to r times of 1 upon n1 square, this 1 upon 3 square 1 upon 9 minus 1 upon 4. Oh sorry, 4 square. So it will be simply 60. Okay, so r 60 minus 9 becomes 7 upon
16 into 9. Okay, this is the R. We can simply write it like this also. 1 upon lambda. So lambda will be simply 16 into 9 upon 7 times of R. By putting the value of R as 1.097 into 10 to the power 7 in this question, we will simply get the value of the whatever the wavelength is 1.8 into 10 to the power minus 6 meters. So let us write down as 1.8 into 10 to the power 6 meter. And I think according to question, it matches with the option D. This is the correct answer to this question. I hope you like this video. If you like this video, you can share with your friends. If you have any doubts, you can comment below in the sections. And please subscribe to my channel. And for more videos related to this, you should connect with our channels and our Telegram groups also. Thanks for watching. Hello guys. This question number 18. It's about the finding the ratio of the mass densities of the two components in which we are given as a calcium 40, that's the atomic number, and the oxygen with the mass number calcium. Sorry. Hello student. So this question is about finding the mass densities in which we have given the two elements calcium and the oxygen. हमें इन दोनों एलिमेंट्स में मास डेंसिटी का रेशियो हमें बताना है. And we should know the concept. The main concept behind this is that कि mass density जो है वो न्यूक्लियस पे डिपेंड करता है, because एलिमेंट का जो मैक्सिमम मास है, जो मास है वो न्यूक्लियस में होता है. So मास डेंसिटी का अगर आपको रेशियो फाइंड आउट करना है तो हमें न्यूक्लियर डेंसिटी का रेशियो फाइंड आउट करना पड़ेगा. एंड न्यूक्लियर डेंसिटी का जो रेशियो है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एटॉमिक नंबर. सो वी कैन सिंपली से दैट the ratio of the nuclear density required ratio of nuclear density will be simply, we can say the mass of calcium density upon mass of oxygen density. Mass density, it will simply 1 because it is an independent of atomic number. ठीक है, this is the simple reason behind to this concept, this question, and according to this, option A is the correct option. If you like this video, please share with your friends, give the thumbs up, and please subscribe to this channel. Thanks for watching.